अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू सीरीज का जो वो है अ वर्क could be finished in 22 days. A work could be finished in 22 days, but due to the absence of three persons, it was finished in 24 days. It was finished in 24 days. The number of workers in the start was. To find the number of workers in the start, what we do, we simply use the trick, that is, the number of workers in the start is equal to number of days used due to absence into number of absent workers divided by number of days exceeded. अगर हम वो देखेंगे तो नंबर ऑफ डेज यूज्ड ड्यू टू एब्सेंस, तो कितने दिन हमें लग गए 24 डेज इंटू नंबर ऑफ एब्सेंट वर्कर्स, वो कितने हैं, दैट इज 3, और नंबर ऑफ डेज एक्सीडेड, कितने दिन ज़्यादा लग गए, ये तो 22 डेज में हो सकता था, लेकिन इसमें कितने डेज लग गए, इसमें लग गए 24 डेज। तो एक्सीड कितने डेज हैं, दैट मीन्स वो है 2 डेज वेर इन एक्सेस। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 12 and 12 into 3, that is 36. So our correct option is 36 is the correct answer. और एक है इसका, that is the this was the short trick. Long method अगर हम इसका देखेंगे तो that is 22. To find the initial number of workers, what we do, see how we can find this from by another method. See, if we take this, the number of workers in the x, in the initial was x, so these could finish in 22 days. These will finish this work in 22 days, and one worker X can finish this in 22 days. One worker will finish it in 22x days. Similarly, when 3 were absent, that means x minus 3, there remained x minus 3 workers, and how many days they took to finish it? कितने डेज उनको लग गए, 24 दिन, 24 डेज। और अगर एक का देखेंगे, एक आदमी का, इनमें से एक आदमी का अगर हम वर्क देखेंगे तो दैट मीन्स वो है 24 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे भी है एक आदमी की वर्क, ये भी है एक आदमी की वर्क, तो दैट मीन्स ये है एक आदमी को कितने दिन लगेंगे, यहाँ पे भी है एक आदमी को कितने दिन लगेंगे, तो दे बोथ आर इक्वल। दैट मीन्स 22x is equal to 24x minus 3, and this is equal to 22x is equal to 24x minus 3 into 24, that is 72, which implies let's transfer 72 to this side and 22 to this side, we will get, which implies 72 is equal to 24 minus 22, that is 2x, which implies x is equal to 72 over 2, that is 36. So this was the correct answer. Again, let's come to this question. This is two pipes A and B. Two pipes A and B can fill a tank in 30 minutes. Two pipes can fill a tank in 30 minutes,
and 18 minutes respectively. So pipe A can fill a tank in 30 minutes and pipe B can fill a tank in 18 minutes. If both the pipes are opened, if both the pipes are opened simultaneously, तो अगर इनको एक साथ क्या खोला जाएगा, how much time will be taken to fill the tank? कितना टाइम इन दोनों को लगेगा उस टैंक को भरने के लिए. तो अगर हम ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैंने पिछली बार भी आपको इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई है, दैट इज एक्स वाई डिवाइडेड बाई x plus y, xy divided by x plus y. That means जितना टाइम एक को लगता है इनटू जो b का टाइम है डिवाइडेड बाय जो a का टाइम है और जो b का टाइम है. ऊपर इनको इनटू करना है, नीचे प्लस करना है, एंड विच इम्प्लाइज, तो अगर हम ये देखेंगे इट इज 30 इंटू 18 ओवर 30 प्लस 18 दैट इज 48. And this will be equal to 6 8s are 48 and 6 3s are 18, and also 2 4s are 8 and 2 15. This will be equal to 15 into 3, that is 45 over 4. So 45 over 4 minutes. This will be the correct option, that is this one, part B will be the correct option. For more questions of this series, just watch every day Bilal Sir School of Mathematics. Thank you.